Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is life in the tropical and subtropical regions. Learning topics: Amazon River Basin in Brazil, Ganga-Brahmaputra Basin in India. The tropical and subtropical regions of the world extend up to 30 degrees latitude north and south of the equator. These regions have warm climate and generally receive abundant rainfall with the exception of the deserts. तो आपका जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है जो आपके इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे भी और सदर्न साइड पे भी 30 किलोमीटर्स तक लाई करता है, ये सबसे ज्यादा फेवरेबल रीजन होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल भी देखी जाती है. The Amazon basin lies in the tropical zone on both sides of the equator up to 15 degrees north and 15 degrees south latitudes. On the other hand, the Ganga-Brahmaputra basin lies in the subtropical zone between 20 degrees north and 30 degrees north latitudes. तो आपका जो Amazon basin है और आपका दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है जो कि इंडिया में है, ये अलग अलग लैटिट्यूड्स पे लाई करता है, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. Quick facts. A river basin is an area of land drained by a river and its tributaries. The Amazon basin and the Ganga-Brahmaputra basin are two important river basins of the world. तो river basin वो होता है, वो land का वो part होता है जहाँ पे river और उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ आकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं, खुद को ड्रेन कर देती हैं. आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिन्स पूरे वर्ल्ड में हैं, एक है आपका Amazon basin, दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. Amazon River Basin in Brazil. The first European to discover the Amazon River was a Spanish explorer, Vicente Yanes Pinzon. Cruising the coast of Brazil in 1500, he sailed into one of the mouths of the Amazon River Delta and realized that he had found a very large river indeed. But the actual exploration started in 1541. तो सबसे पहले Amazon Basin का जिसने खोज किया था वो एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था विंसेंटा यानेस पिंसोन, जिन्होंने घूमते घूमते सेल करते करते ये जाना कि ये बहुत ही बड़ी रिवर है. The Amazon Basin lies in tropical region near equator between 10 degrees north and 10 degrees south. It is also known as equatorial region. The river Amazon flows through this region. The place where a river flows into another body of water is known as the river's mouth. Several tributaries confluence on the Amazon River to form the Amazon Basin. It drains parts of Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela. तो आपका जो Amazon Basin है वो इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है. यहाँ ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रीजन होता है बारिश के लिए भी. इसी रीजन में ही आपकी Amazon River फ्लो भी करती है और आपकी अलग अलग पार्ट्स ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला की कुछ कुछ पार्ट्स की रिवर्स को ये ड्रेन करते हुए लेके जाती है. The Amazon, which originates in the Andes Mountains west of the basin, is the second largest river in the world. It flows for a distance of about 6,400 kilometers before draining into the Atlantic Ocean. The Amazon and its tributaries contain the largest volume of water. The Amazon accounts for nearly 20% of the total water carried to the oceans by rivers. The basin has been filled by sediments brought down by the river and its many tributaries. The basin encompasses the world's most extensive rainforest and is home to an extraordinary diversity of birds, mammals and other wildlife. तो आपकी जो Amazon River है, it originates from the Andes Mountains and it is the second largest river in the world. इसके आसपास वाटर बॉडी होने की वजह से यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और मैमल्स भी देखने को मिलते हैं. The Amazon Basin is characterized by hot and wet climate throughout the year. Days and nights are hot and humid. It rains almost daily. At night the temperature goes down but almost daily. At night, the temperature goes down, but the high humidity makes the climate unfavorable for human beings. और Amazon Basin का जो आसपास का रीजन है वो काफ़ी गर्म है, उमस वाला रीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा लोग बसे हुए दिखाई नहीं देंगे. ऑलमोस्ट यहाँ पे डेली ही बारिश होती है, लेकिन यहाँ का रीजन हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है. Flora and fauna. Due to the hot and wet climate, the Amazon River Basin has the richest plant in the world. Dense evergreen equatorial rainforests are found here. These forests are called selvas. On the southern side of these forests are found the savanna grasslands. और क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही बारिश होती रहती है तो यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं. उसके अलावा इन्हीं फॉरेस्ट के सदर्न साइड में आपको जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं वो हैं सवाना ग्रासलैंड्स.
The forests in the Amazonia are the largest and thickest of their kind in the world. The main trees are mahogany and ebony, which provide a variety of hard timber. Ballast, the lightest wood, is also found here. It is mainly used in the making of rafts, model of the airplanes, etc. The other products from the Amazonian forests are rubber, cocoa, nuts, quinine from cinchona bark, wax from carnauba palm trees, gums, raisins, cork, etc. तो यहीं पे इन्हीं फॉरेस्ट में आपको अमेजोनिया भी मिलेगा, जो कि जहाँ पे आपको बहुत वाइड वैरायटी ऑफ महागनी, एबनी ऐसे बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देंगे. एवरग्रीन प्लांट्स यहाँ पे होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं. यहीं पे आपको टिम्बर भी मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा लाइटेस्ट वुड होता है, जो अलग अलग चीजों में यूज करा जाता है. उसके अलावा यहाँ पे आपको क्यूनाइन, कोकोआ, नट्स ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. The selvas is the home of a rich variety of wildlife. It includes small mammals such as monkeys, jaguars, pumas, sloths, anteaters, armadillos, etc. A large variety of birds, reptiles, and insects are also found here. Alligators lie on the muddy banks of the river. The Amazon rainforests are the largest of their kind in the world. और यहाँ पे आपको वाइड वेराइटी ऑफ मैमल्स भी देखने को मिलेंगे. स्मॉल मैमल्स जैसे कि जैगवार्स, अलग अलग इंसेक्ट्स, स्लॉथ्स, बेयर्स, मंकीज, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. Climatic conditions. This basin has a hot and sultry climate. The selvas in this region add oxygen to the earth. They are called the lungs of the earth. The Amazon rainforest is one of the world's greatest natural resources. About 20% of the earth's oxygen is produced by the rainforests. Amazon rainforest जो है इसको lungs of the earth भी कहा जाता है, क्योंकि majority of the oxygen जो आपकी earth surface पे है वो इन्हीं forest से derive होता है. The Amazon basin receives about 9 feet of rain every year. Due to the large river basin and the tropical heat and moist air near the ground is heated, causing it to rise. When it reaches condensation point, it forms rain clouds. This happens for all 12 months. This type of rainfall is called convectional rainfall. It rains almost the whole year in the Amazon. और Amazon basis पे आपको 9 फीट तक की रेनफॉल देखने को मिलती है. पूरे 12 महीने यहाँ पे कंडेंसेशन चालू रहता है, जिसकी वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे आपको बारिश सबसे ज्यादा भारी मात्रा में देखने को मिलती है. The climate in the Amazon rainforest is hot and humid. There is not many seasonal changes and the temperature remains the same for much of the year. The weather remains the same all year long. तो यहाँ पे आपका जो वेदर कंडीशंस हैं वो पूरे साल अप्रॉक्सीमेटली सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते. The rainfall in the Amazon region is said to be decreasing due to deforestation. If deforestation continues, no forest will be left for future generations. Every year, large areas of forests are cut down, thus increasing global warming and pollution from the carbon dioxide and methane released due to decaying and burning of plants. और क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, उसकी वजह से इस एरिया में रेनफॉल कम होती जा रही है. और अगर इसी रेट पे डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं बचेंगे. People. Amazon basin, being a rainforest region, is sparsely populated by primitive nomadic tribes who survive on fishing, hunting and food gathering. Some of them practice shifting cultivation. Since the forests grow back rapidly, the tribe soon leaves for another area. Huge tracts of valuable rainforests have to be cleared to pave way for pastures and for the cultivation of commercial crops like rubber and soybean. Mining and logging led to reduction of forests cover. Slash and burn agriculture is prevalent. About 20% of the Amazon forest has been cleared for pastures, crops, lumber and firewood. Today, the bulk of the human population in the Amazon basin found in cities which have emerged from the surrounding rainforest to become significant population centers. और क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग होते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, बहुत सारे ट्राइबल नोमैडिक ग्रुप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो बेसिकली हंटिंग पे, गैदरिंग पे, फिशिंग पे डिपेंडेंट हैं. उसके अलावा 20% से भी ज़्यादा इन सारे फॉरेस्ट का जो एरिया है वो क्लियर किया जा चुका है ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्टार्ट करवाया. क्विक फैक्ट्स. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया टू. अ पीस ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग डाउन ट्रीज and burning the stumps. These patches are cultivated for 2 to 3 years and after they lose their fertility, these are abandoned and then they clear new patches for cultivation. Such methods are harmful for the environment and attempts are being made to check it. इन areas को जब 2-3 साल के कल्टिवेशन के लिए पूरा कट कर दिया जाता है, जैसे ही फर्टिलिटी खत्म हो जाती है वैसे ही इनको
अबैंडन कर दिया जाता है, फिर नया पैस्चर ऑफ लैंड देखा जाता है, फिर वहां पे कल्टिवेशन करी जाती है, वो भी खराब हो जाता है लैंड, तो उसको भी छोड़ दिया जाता है। ये रेगुलर इतना ज्यादा हो रहा है कि बहुत सारा जो मेजॉरिटी आपका रेन फॉरेस्ट का एरिया है वो क्लियर हो चुका है। Ganga-Brahmaputra basin. India has one of the most extensive, flat and fertile plains in the world. The Great Plains of India has been built by two great river systems, the Indus in the west and the Ganga-Brahmaputra in the east. The plain region is made up of alluvium brought down and deposited by many rivers. The Ganga-Brahmaputra basin is one of the largest river basins in the world. Indian region जो है वो आपका it is one of the most fertile regions in the world. आपके वेस्टर्न साइड पे इंडस रिवर है जो आपके अलग अलग अलुवियम डिपॉजिट लेकर आती है, और ईस्टर्न साइड पे आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन है जो अलुवियम डिपॉजिट्स लेकर आते हैं, जो आपके लैंड को बहुत ही ज्यादा उपजाऊ बना देते हैं। Location. It lies to the south of the Himalaya mountains and extends off the Himalaya mountains and extends for about 2,500 kilometers from Satluj River in the west to the Brahmaputra River in the east. Its width varies from about 100 kilometers in Assam to about 400 kilometers in the Ganga Plains. तो ये आपके हिमालयन रीजन की तरफ से आती हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में असम मेघालय तक फ्लो करती हैं। All over the world, the alluvial plains have supported great civilizations. Both the Indus and the Ganga civilizations started and progressed in the northern plains of India. The growth and success of these civilizations were due to surplus agricultural civilization supported by fertile soils, suitable climate and enough water supply. तो आपके इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र वाले रीजन्स पे बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन यानी कि लोगों की बसावट स्टार्ट हो गई थी। रीजन बीइंग कि यहाँ पे इनफ सप्लाई ऑफ वाटर है, जो सॉइल है वो फर्टाइल है, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। The Ganga River is formed by the merging of Bhagirathi, which originates from the Gangotri Glacier at Gaumukh, and Alaknanda from the Alakpur glaciers. The Ganga, 2,500 kilometers long, is the longest river in India. The Ganga River is joined by many tributaries such as Yamuna, Ghaggar, Gomti, Gandak, Kosi, Tista, etc. from the north and Chambal, Sindh, Betwa, Son, Damodar, etc. from the south. तो आपकी जो गंगा रिवर है इट इज 2,500 किलोमीटर लॉन्ग और आपकी इंडिया में सबसे बड़ी रिवर है जो कि गंगोत्री से निकलती है। इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। नॉर्दर्न पार्ट में यमुना, घाघर, गोमती, तिस्ती, ये सारी नॉर्दर्न साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं और साउथ साइड में आपका चंबल, सिंध, ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। The Ganga river system drains most of Uttarakhand, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. The Ganga river flows from a relatively drier area to a region of increasing rainfall. This helps most of the tributaries to course of the Ganga, that is the deltaic region. उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की साइड की जितनी भी रिवर्स हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पूरी ड्रेन हो जाती हैं। The Brahmaputra river also rises from a glacier near the Mansarovar lake in Tibet. It is known as Sangpo in Tibet. The river flows eastwards for a considerable distance and enters India through Arunachal Pradesh. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मानसरोवर लोक जो कि तिब्बत में प्रेजेंट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और ये ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है। The large amount of sediments carried by the river are deposited in India. The plain thus formed in Assam extends for about 640 km with a general width of about 100 km. जितने भी sediments हैं इन rivers से वो इंडिया की तरफ ही अलग अलग states में deposit हो जाते हैं। The Ganga and the Brahmaputra rivers join together in their lower courses before falling into the Bay of Bengal. Together, these two rivers form the largest and perhaps the most fertile delta in the world, the Sundarban Delta. The major part of this delta now lies in Bangladesh. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जब फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाते हैं उससे पहले ये लोअर कोर्सेज पे मीट करते हैं और जो लैंड फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिस डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं सबसे ज़्यादा फर्टाइल है इन द वर्ल्ड, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इसका मेजॉरिटी पोर्शन प्रेजेंट डे में बांग्लादेश में है। Climate. The region has monsoon type climate. Summers are hot and dry. Most of the rain takes place in monsoon season, that is from June to September. The rainfall is heavy in the Brahmaputra basin and in the eastern Ganga basin. Western Ganga basin receives relatively less rainfall. Winters are cold and dry. यहाँ पे जो आपका normally temperature होता है वो गर्म होता है, humid होता है और जो ठंडियों का टाइम होता है वो usually बहुत ज़्यादा ठंडा और dry रहता है। Quick facts. According to the Hindu mythology, the Ganga was brought down to the earth from heaven by the prayers of famous king
Bhagirath, the Ganga came to the earth from Lord Shiva's jata to make land fertile and wash away sins of the people. This is the reason that it is called a holy and sacred river. तो माना जाता है कि एक भागीरथी नाम के किंग थे जिनकी प्रेयर की वजह से शिवजी की जटाओं से गंगा का ओरिजिन हुआ था, ताकि सारे लोगों के पाप धुल जाएं और वहां का लैंड फर्टाइल हो जाए। इसी वजह से जो गंगा रिवर है वो काफी ज्यादा एक पवित्र नदी मानी जाती है। Flora and fauna. Located in the monsoon region, the area has hot summers, mild winters, and heavy rain from June to August. The forests of the tropical region have evergreen trees. Whole forests of the monsoon region have deciduous trees that shed their leaves in summer. Common trees are the sal, peepal, and banyan. तो क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, यहाँ की गर्मियाँ काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड रहती हैं, सर्दियाँ माइल्ड रहती हैं और यहाँ पे आपको रेनफॉल भी देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज भी प्रेजेंट हैं। उसके अलावा एवरग्रीन ट्रीज जो हमेशा ही रहते हैं वो भी प्रेजेंट हैं। Ganga-Brahmaputra region is extremely fertile and is most suitable for agriculture. Most of the forest has been cleared for agriculture. Rice is the main crop. Wheat is grown in the drier areas. In the deltas region, jute is grown mainly for export. Tea is widely grown on the hillsides. Apart from the food crops like rice, wheat and millets, cash crops like sugarcane is also grown. Bengal tiger, alligator are the main animals of the region. तो आपके जो गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे आपको कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, हर टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। टी भी है। इसके अलावा जो राइस मेन क्रॉप है वो बेसिकली आपके एक्सपोर्ट के लिए भी उगाया जाता है। इसके अलावा बंगाल टाइगर और एलिगेटर जैसे जो एनिमल्स हैं यहाँ के मेन center of attraction. People. The subcontinent is thickly populated as the climate is quite conducive for agriculture. It has dense network of roads and railways. The movement of goods and people is rapid as the topography of the region is flat. A number of towns and cities exists all across the plain. Delhi, the national capital territory, is also located in this plain. The others well-known cities along the Ganga are Kanpur, Patna, Allahabad, Varanasi and Kolkata. Wheat, rice, sugarcane and jute are extensively grown here. Two main crops of the region are the rice and kharif crop in summer and the wheat and rabi crop in winter. At times, a third crop called zaid crop is grown between April and June if water is available. There exist even several agricultural industries related to farming activities. Modern technological advances have the lifestyle of the people living in this part of the world. Life in the villages of India is undergoing a radical change. In comparison to the Amazon basin, the life in the Ganga-Brahmaputra basin is much more advanced. तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो यूजुअली आपकी फ्लैट है। एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट सूटेबल लैंड है इस एरिया में। रोड्स की, ट्रेन्स की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये प्लेन्स वाले रीजन है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको सिविलाइजेशन भी देखने को मिलेगी। दिल्ली, वाराणसी ऐसी जगहें भी इसी नदी के किनारे में स्थित हैं और अमेजॉन बेसिन के कंपैरिजन में जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है वो ज़्यादा एडवांस्ड है। Recap. The tropical and subtropical areas extend up to 30 degrees latitudes in both the hemispheres. The Amazon River basin lies between Guyana and Brazilian highlands in Brazil. The Amazon is the second longest river in the world. It rises from the snow-covered Andes Mountains in Peru. Amazon River has the largest river basin in the world. The climate in the Amazon basin is hot and wet throughout the year. This basin is rich in plant life with equatorial evergreen rainforests called selvas. Shifting agriculture is widely practiced in this region. The Ganga-Brahmaputra basin lies in the south of the Himalaya mountains. The Ganga river is formed by the merging of Bhagirathi and Alaknanda rivers. Brahmaputra river rises from a glacier near Mansarovar Lake in Tibet. Ganga and Brahmaputra rivers form the largest delta in the world, known as Sundarbans. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में जाना, दोनों हेमिस्फेयर में 30 डिग्रीज तक लाई करता है। इसके अलावा आपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में जाना और बेसिकली आपने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और उसके अलावा अमेजॉन बेसिन के बारे में आज जाना। स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आपको खुद से करनी है।